हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. लेट्स लुक इनटू बोथ ऑफ दीज टॉपिक वन बाय वन. Nitrogen fixation. Nitrogen fixation is a process by which atmospheric nitrogen is converted into ammonia. Now, this conversion can be natural or artificial. In natural processes, it can be converted by the living organisms or by the microorganisms, or it can be converted by the non-living factors. And in the artificial method, it is converted in industries. Now, in nature, nitrogen is harvested from the atmosphere by various microorganisms to convert nitrogen into various other inorganic forms such as ammonia, nitrites, and nitrates. And this can be easily used up by plant and used in various metabolic activities and other functions. Let's answer this question, why nitrogen is very much essential for plants and ultimately all the life forms on earth. After water, plant requires nitrogen the most. Why do they require nitrogen in this much abundance? That is because it is constituent element for chlorophyll, proteins and vitamins. Chlorophyll is the green colored substance present on the leaves of green plants. This pigment is helpful in the process called photosynthesis. Nitrogen is also one of the constituent element for proteins and vitamins. Nitrogen plays an important role in the metabolism, growth, reproduction and hereditary. Right? If it is essential for plants, then definitely the animals which are consuming the plants, they would also in their body nitrogen would also be essential. Why? That is because nitrogen is helpful in the synthesis of DNA and proteins. DNA और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द बेसिक एलिमेंट. अब अगर DNA सिंथेसिस में इफ नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, right, then definitely all the life form would get affected by its absence. Now let us discuss what are the various types of nitrogen fixation, whether they are living or non-living or natural or man-made. सारे methods हम लोग अभी discuss करेंगे. तो nitrogen fixation can be done by two factors, which is abiotic and biotic. Abiotic stands for the conversion factors which does not include life. Bio, the word bio, B-I-O, stands for life. तो ऐसे फैक्टर्स जिसमें लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है, वो सभी रीजंस या फैक्टर्स हम लोग एबायोटिक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. ऐसे प्रोसेसेस जिसमें लाइफ या और कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ऐसे टॉपिक हम बायोटिक फैक्टर्स में पढ़ेंगे. सो इन एबायोटिक फैक्टर्स they can be natural or man-made. Abiotic factors would include, in natural processes, they would include thunder and electrical discharge. And in biotic factors, definitely in industries we can prepare, we can synthesize nitrogen. Now let us look into the biotic factors. Biotic factors में there can be different microorganisms which are helpful in conversion of nitrogen. अब इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच कैन लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे कैन बी एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली रह सकते हैं किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हुए बिना. ठीक है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर दी एग्जाम्पल्स. नाउ द टू टर्म्स विच इज एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनोरोबिक बैक्टीरिया माइट बी न्यू फॉर यू. इसके लिए वन लाइन इंट्रोडक्शन. एरोबिक बैक्टीरिया आर दूज विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल. उनको अपना सर्वाइवल कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. एनारोबिक बैक्टीरिया, दे नीड नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. कोई ज़रूरी नहीं है ऑक्सीजन उनके लिए. अगर उनको एनवायरनमेंट में मिल रही है दैट्स वेल एंड गुड. नहीं मिल रही है देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव. लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट डज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स. The symbiotic relationship implies when two
or more organisms which are living together, they might get benefit by each other's presence. एक दूसरे की presence की वजह से दो या दो से ज़्यादा organisms को profit मिले, benefit मिले. तो in symbiosis we would discuss about the root nodules of leguminous plants and stem nodules. Root nodules, leguminous plants की root nodules में there is bacterium which is rhizobium. Rhizobium leguminous plants की root nodules में रहता है. Both the organisms are getting benefit. The rhizobium fixing the nitrogen and providing it to the leguminous plant. In turn, the leguminous plant is providing nutrient to this bacterium. तो दोनों ही एक दूसरे के लिए essential हैं और दोनों की प्रेजेंस से एक दूसरे को बेनिफिट मिल रहे हैं. Now let us discuss the process nitrogen cycle in detail. So nitrogen cycle is a biogeochemical cycle by which nitrogen is converted to multiple chemical forms and it circulates among atmosphere, terrestrial and marine ecosystem. Here the new term is biogeochemical. Bio stands for life, geo stands for earth, right? बायोलॉजिकल तरीके से अर्थ के अंदर डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल. ओके, सो द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैरिड आउट बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस दैट्स वी हैव डिस्कस्ड, जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में डिस्कस किया था. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सारे बायोटिक फैक्टर्स आ गए, फिजिकल फैक्टर्स में सारे एबायोटिक फैक्टर्स आ गए. Now let's move ahead and look into the diagram of nitrogen cycle. So here we can see the atmospheric nitrogen. It would be used up by different organisms and would be returned to the atmosphere. Now let us see the atmospheric nitrogen, how it is used up by different organisms and returned back to the nature. Let's discuss the abiotic factors first. So lightning fixes the nitrogen. This nitrogen is sent to the soil where different compounds of nitrogen are there. Now in soil there would be certain bacteria present. These bacteria again turn the compounds of nitrogen into gaseous nitrogen and ultimately it is returned to the atmosphere. This was about the abiotic factor. Now let us discuss how biotic factors convert the nitrogen present in the atmosphere. The nitrogen fixing bacteria and blue-green algae would fix the atmospheric nitrogen. The bacteria which are present in the soil, they would fix again by the nitrogenous compound. Thus, this fixed nitrogen would be taken up by the plants. This plant would be eaten by herbivorous animals. Now herbivorous animals, they would definitely excrete out something. जैसे ही वो excrete out करते हैं या फिर उन herbivores animals की, carnivores animals की डेथ होती है, उनके डेथ के बाद में the components are again retained by the soil. जितने भी components होते हैं, whether they are nitrogenous waste or other components are there, वो सारे वापस से soil में आ जाते हैं. Now the bacteria which are present in the soil, they would again turn the nitrogenous compound into gaseous nitrogen. Now this gaseous nitrogen is definitely given back in the atmosphere. That is it for this particular video. In the next video, we would have question and answers of this chapter. The questions would be objective type, short answer type, long answer type, and high order thinking questions. Thank you.